Yes, good morning, students. Today we are going to start with the civics topic, Panchayati Raj. Just before that, uh, we have covered the topic what is government. In that, we studied about the different type of government, and in India we are having democratic government. In this, we choose our representatives through the process of elections. So, what after the election, when we choose our representative, uh, what is the next work? So the next work is that those representatives, uh, how they work, what type of responsibilities they are having, that we are going to learn in this. Now before that, as we have already studied in the chapter government, the three levels of the Indian government: central government, state government, and the local self-government. The central government means government of a whole nation, center में जो government है, state government in a particular state, local self government, that is divided into two parts, rural and urban areas. ठीक है. So in this chapter we are going to study about the rural local self government. So what on which topics we are going to focus? Gram Sabha, village panchayat or gram panchayat, panchayat samiti, jila parishad. So these three, village panchayat, panchayat samiti, jila parishad, these are the three tiers of panchayat. So in this chapter, we are going to learn these things. Along with that, we are also going to study one short story of the village Hatas and the functions of the village panchayat. So that we are going to learn. So now we are going to start with Gram Sabha. ग्राम सभा, बच्चों आपने पढ़ा हुआ है हिंदी में पर्यायवाची होते हैं. तो जैसे गांव है तो गांव का एक पर्यायवाची ग्राम भी है. ठीक है. तो इसको हम ग्राम सभा है जो विलेज लेवल पे एक मीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ग्राम सभा. सो व्हाट इज द ग्राम सभा? मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत. कोई पंचायत अब एक विलेज में भी हो सकती है या दो तीन विलेजेस को इकट्ठी मिला के भी बन सकती है. सो व्हाट इज अ ग्राम सभा? इट इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत. सो हु विल बी द मेंबर्स of the Gram Panchayat? Anyone who is 18 years old or more and who has right to vote. That we have already studied. So when you will get right to vote when you attain the age of 18 years. So adult किसको कहा जाता है? Those who attain the age of 18 years or more. तो ग्राम सभा के कौन members होंगे? All adults. Adults कौन? Who attain the age of 18 years or more than that and having voting right. Now I will explain you. Suppose this big circle is the panchayati. Okay. Or now I am making some small dots. Along with that, I am just making some big circles bigger than these dots. So this one is the area covered by panchayat, and these small dots represent the children, and these big circles, little big circles, these represent as adults. So who can participate in the meeting of Gram Sabha? These adult people. Like you are in class 6, you are not supposed to be the part of Gram Sabha meeting क्योंकि आपकी ये उम्र ही नहीं है. So when you attain the age of 18 years, those who are living in the village areas, they know only the adult people can be the part of Gram Sabha meeting. Okay. अभी ग्राम सभा की मीटिंग है तो हु बिगिंस दैट मीटिंग? बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको सरपंच भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, मुखिया भी कहा जाता है, एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत पंच. अब इन मीटिंग्स में होता क्या है? दे डिस्कस्ड वेरियस इश्यूज इन द मीटिंग. जो भी विलेज की डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. सो वेरियस इश्यूज आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग. So next we are going to discuss the story of Hardas. So the villagers were very excited because now they are going to attend the first Gram Sabha meeting after the formation of new village panchayat. जो न्यू विलेज पंचायत बनी थी उसके बाद इनकी फर्स्ट मीटिंग थी. तो at that time they were going to discuss certain problems which they were facing. So these were the problems with solution. The first problem was water shortage.
So one of the villager told that the village was facing a very acute problem of water shortage, uh, as हैंड पंप वाटर हैड गॉन बिलो, जिस लेवल तक उसको डिग किया गया था उसके नीचे तक चले गया पानी, उससे भी नीचे चले गया पानी. Hardly any water in the tanks and women had to go far away to get water. So there was a river Suru 3 kilometers far away, so women had to go there to get the water. To overcome this problem they suggested many measures. काफी उन्होंने solutions दिए. One of the members said कि हम एक मतलब पाइपिंग कर लेते हैं वाटर की, जो सुरू रिवर का वाटर है उसको हम पाइप के साथ हम अपने विलेज तक ले आते हैं एंड स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक. So someone said it is a very expensive task. Then some said कि we can deepen the hand pumps, we can clean the well for this season. Then they said कि one of the villagers said, Anwar said कि he visited his brother's village. There they followed the watershed development. Watershed development scheme क्या है? The way they can conserve the water or recharging or refilling the groundwater. Under this, उस विलेज के लोगों ने क्या किया था? They constructed the check dams, planted trees and tanks भी बनाए थे उन्होंने. तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. एट लास्ट जो पंचायत ने सोल्यूशन जो किया, जो सरपंच ने और पंच ने मिलकर जो सारा सोल्यूशन माना, वो क्या था कि फॉर दिस सीजन दे डिपेंड टू हैंडपंप्स को और ज्यादा डीप डिग कर लेंगे एंड क्लीन वन वेल फॉर दिस सीजन. बट दे वांट परमानेंट सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. फॉर दैट दे डिसाइडेड दैट दे शुड गो टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ. ठीक है, वहां पे जाएंगे एंड दे गेट नॉलेज रिगार्डिंग द वाटरशेड डेवलपमेंट. सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, दे सेट अप अ बेंचमार्क कि दैट हु आर द इंडिविजुअल्स एंड द हाउसहोल्ड दोज हु नीड गवर्नमेंट एड एंड असिस्टेंस, जिनको गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है. तो एक उन्होंने एक लेवल सेट किया हुआ है कि अगर किसी भी फैमिली की इनकम जो इनकम है जो गवर्नमेंट ने बताई है उससे कम है, तो दैट कम अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन. तो जो नेक्स्ट एजेंडा था दैट इज बीपीएल. अब उसमें क्या था, उस टाइम पे जब मीटिंग हो रही थी, 2 or 3 ऑफ द विलेजर्स दे स्टार्टिंग विस्परिंग, मतलब धीरे धीरे बात करते हैं कि जो ये लिस्ट बनी है इसमें उन लोगों के नाम है दोज हु हैड कलर टीवी और मोटर बाइक एंड हैड लैंड आल्सो. तो अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट है तो उनके नाम उसमें नहीं होने चाहिए. एंड इन दैट लिस्ट there was not a name of a person, Om Prakash, who was a landless laborer. So उसमें लिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी? In that list they mentioned the name of the people who were not poor and the one who was landless or poor name was not there. तो उसका सोल्यूशन क्या दिया सरपंच ने? क्या किया? सरपंच gave the instruction that Om Prakash family's income to be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, so his name should be included in the list. Reschedule करने को कहा. Now the third problem was problem of road. जो उनके विलेज की रोड थी that was not properly maintained, that was in a very bad condition. So what solution they came up with? They planned to repair the road that connects the village to highway. So these were the 3 problems that they discussed on that day, जिसमें पंचायत के मेंबर्स के साथ साथ वहां पे ग्राम सभा के भी लोग थे. पंचायत अकेली तो काम नहीं कर सकती, दे नीड द अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा. ओके, नेक्स्ट इज विलेज पंचायत. अब विलेज पंचायत क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. नाउ हियर यू कैन लर्न कि जो ग्राम सभा है उसमें कोई इलेक्शंस नहीं है. ऑटोमेटिकली ऑल द एडल्ट्स आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. बट इन विलेज पंचायत इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर. एंड हु इलेक्टेड दीस मेंबर? द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, जो एडल्ट हैं, दे इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत. अब जो ये मेंबर्स का नंबर कैसे डिसाइड होता है? दे वेरीज फ्रॉम 7 to 70 अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. विलेज में कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो विलेज पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड होते हैं. सो फर्स्ट दैट विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. उनको वार्ड क्या होते हैं? स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड फ्रॉम ईच वार्ड दे इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव नोन एज वार्ड मेंबर और पंच.
लेट मेक इट मोर क्लियर। लाइक आप 6th क्लास है, पूरे 6th क्लास है, so we divided the 6th class into 4 sections, रेड ब्लू ग्रीन एंड पिंक डिवाइड होगी। तो वो जो स्मॉलर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, सेक्शंस में डिवाइड किया, उसको हम कंसीडर कर लेंगे वार्ड्स। ओके, एंड फ्रॉम ईच सेक्शन वी चूज वन और इलेक्ट्स वन मॉनिटर। तो वो जो इलेक्टेड जो मॉनिटर है उसको हम यहाँ पे विलेज लेवल पे क्या कर लेंगे, नोन एज वार्ड मेंबर और पंच। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये कंप्लीट आपकी एक होल क्लास है, या अगर हम इसको होल विलेज भी लेके चले, ठीक है, इस विलेज को मैंने ऐसे डिफरेंट स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर दिया है। 6 एरियाज आर देयर, तो हर एक एरियाज में से हम एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेंगे थ्रू इलेक्शन। दोज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नोन एज वार्ड मेंबर्स। ओके, सो द ग्राम सभा, द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट्स सरपंच और ग्राम पंचायत। अब देखो पूरी 6th क्लास है, मॉनिटर्स चुन लिए। अब पूरी 6th क्लास में से कहा जाता है एज अ होल यू आल्सो चूज वन हेड गर्ल और वन हेड बॉय। तो आप अपने सभी सेक्शंस में से सभी जो स्टूडेंट्स कलेक्टिवली एक हेड बॉय या हेड गर्ल को चुन लेते हो। उसी तरह जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं दे आल्सो चूज वन हेड एंड दैट हेड इज चूज और इलेक्ट्स दैट हेड, उसको इलेक्ट करते हैं, दैट इज सरपंच और पंचायत प्रेसिडेंट। टेन्योर कितना है, टर्म कितनी है, ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। अब देखो ग्रास रूट लेवल है चाहे हायर लेवल है, जो भी हमारे गवर्नमेंट का जो टर्म है दैट इज ऑफ 5 years। सीट्स रिजर्वेशन, अब पंचायती लेवल पे जो हम पंचायत की बात करते हैं, जो हमारा पंचायती राज है, यहाँ पे सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर SCs एंड STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड फॉर विमेन। विमेन के लिए अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जैसे पंजाब है या कई और स्टेट्स भी हैं, दोज गिव 50% ऑफ रिजर्वेशन फॉर द विमेन। SC STs का क्या जाता है, प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना प्रपोर्शन है उसके बेसिस पे रिजर्वेशन है। हो सकता है किसी एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स ना हो तो वहां पे सिर्फ SCs हो सकता है किसी एरिया में शेड्यूल ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट ना हो, तो एज पर देयर प्रपोर्शन इन द पॉपुलेशन। So village panchayat has a secretary who is also the secretary of gram sabha। ग्राम सभा का भी वही सेक्रेटरी है और ग्राम विलेज पंचायत का भी वही सेक्रेटरी है। अब इसमें क्या चीज है, he is not an elected person, he or she is not an elected person, इसको इलेक्ट नहीं किया जाता but appointed by the government। अब गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। अब इसका काम क्या है, दैट द सेक्रेटरी, उसने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स को कॉल करना है, कॉल्स द मीटिंग एंड कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। इसका मतलब है कि जब भी उनकी मीटिंग्स होंगी उसमें क्या डिस्कशंस हुई, क्या डिसीजंस हुआ, क्या सॉल्यूशंस निकले, उन सब का रिकॉर्ड भी कौन रखेगा, सेक्रेटरी। नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा और व्हाट रोल दैट ग्राम सभा प्ले। नंबर 1, that gram sabha is the key factor in making the gram panchayat is responsible and works properly। तो ग्राम सभा ये इंश्योर करती है कि जिस ग्राम पंचायत को उन्होंने चुना है वो रिस्पॉन्सिबल हो और वो अच्छे से काम करे। और इट इज द प्लेस, ग्राम सभा एक ऐसा प्लेस है वेयर ऑल द प्लान्स ऑफ द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत पुट बिफोर द पीपल। लोगों के सामने सारे काम, सभी प्लान उनके सामने रखे जाते हैं फॉर डिस्कशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्राम सभा का कोई भी काम जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक दैट वर्क इज नॉट अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। हेल्प्स टू रिजॉल्व द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन राइट मैनर, प्रिवेंट्स द ग्राम पंचायत फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को गलत काम करने से रोकती है। कौन से गलत काम, लाइक मिस यूजिंग ऑफ मनी, मनी का मिस यूज ना करें जो उनको फंड्स वगैरह मिल रहे हैं। फेवरिंग सर्टेन पीपल, जैसे भी हमने अभी मैंने आपको बताया था कि the name of the people those who were not poor, their name was there in the BPL list। तो इस तरह से गलत काम करने से ग्राम सभा रोकती है उनको। कीप्स एन आई ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ऊपर आंख नजर रखती है कि वो ठीक से काम करें, ठीक है। सो अलोंग विद दैट व्हाट अदर रोल द ग्राम सभा प्लेज, इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म्स कमेटी। ग्राम सभा छोटे मतलब कमेटीज बना लेती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क कमेटी, नॉट इन एवरी स्टेट, इन सम ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अब इन कमेटीज में क्या कौन कौन इंक्लूड होता है, सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, कुछ ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, एंड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत।
and these committees work together to perform specific tasks. मतलब इन committees का काम क्या होता है कि कोई भी specific task है उसको complete करना, मिलकर complete करना. So I hope till here everything will be clear to you. Now it's your homework that you are going to differentiate between Gram Sabha and Gram Panchayat, and tomorrow we are going to discuss that.